Just give me a second. Like the meeting is getting set up for YouTube. Okay, so it is done. We can start. Yeah, meeting is live streamed on YouTube. बाद में तुम लोगों के लिए, if you want, you can just go through the YouTube lectures and revise your concepts. Okay, so we'll start with the today's lecture. Today we'll do one question with the this yesterday कल ने हमने एक क्वेश्चन किया था ना, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी वाला, वैसे ही एक क्वेश्चन करेंगे. जस्ट लिटिल थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे सैलरी के कंप्यूटेशन में और हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन में, एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई होप तुम लोगों को सबको अभी गुड न्यूज मिल गया होगा दैट योर एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड, राइट? मिला है ना सबको? Okay, let's start. So what is given in the particular question is, Mr. Chintan Chitrai, a severely physically disabled, is employed with Pidlife Industries. He furnishes you the following information for the year ended 31st March 2022. After reading the first line itself, you should know that there is a disability का जो आपका ये ना डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6A, वो आपको यहाँ पे देना है. ठीक है, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि आपको हर एक, लाइक व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन आल्सो, दैट टाइम आल्सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि कौन से डिडक्शंस यहाँ पे आएंगे. फिजिकल डिसेबिलिटी का डिडक्शन कौन सा है? 80U का डिडक्शन है, राइट? सो इट इज 85%, तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,25,000. यू नो 75,000 एंड 1,25,000, दो डिडक्शन अवेलेबल है यहाँ पे हमें. नेक्स्ट, सो उसके बाद उसके क्या है? सैलरी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन इन सैलरी? सैलरी के लिए क्या दिया है? बेसिक सैलरी दिया है पर मंथ. वी नीड इट फॉर अ ईयर, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 12. Dearness allowance, again 20% of the basic salary. We'll see how much it is for the per annum, and then we'll calculate 20% on it. Then we have professional tax deducted at 200 per month. तो पहले add करेंगे, फिर उसको deductions में से less कर देंगे. That is just under जो अपने standard deductions है उसमें से. Then we have bonus. Bonus अगर receive है तो वो taxable है, तो वो जाएगा. House rent allowance fully taxable, so 800 into 12. Perquisites दिया हुआ है, that is also taxable. Arrears of salary received as per revised pay scale. Net arrears at 50,000. Tax deducted at source on arrears of salary. This is जो कल किसी ने तो पूछा था ना TDS क्या होता है, right? This is what TDS is. Tax deducted at source. He owned a residential house which was used for his own residence, जिसके लिए उसने fair rent is calculated as 50,000. Municipal valuation of the house is 60,000, right? So ये क्या है? SOP है. तो SOP के लिए we know the rule, right? You only get the municipal taxes जो हमने पे किया उसका वो माइनस हो जाते हैं वहां से. So he spent the following amount during the year. So municipal taxes paid are 6,000. Insurance of the property is 2,000, and interest on the housing loan which is 40,000. So which is आपको कितने साल के लिए मिलता है? वो 5 साल के लिए, right? The loan कब लिया है? 2018. अभी क्या है? 2022. So 5 साल का पीरियड चालू है, right? So you will get this particular deduction, right? Next, he paid rupees 4,000 by credit card to GIC for medical insurance of his health. तो ये भी उसको क्या मिलेगा? He will get इसका भी, उसको इसका भी क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, right? Because he is paying what? मेडिक्लेम पे रहा है. मेडिक्लेम का डिडक्शन कौन से इसके अंदर आता है? 80D. Okay, so now we'll start with the solution part. First, Mr. Chintan Chitrai. What it is, Mr. Chintan Chitrai, वो अपना इंडिविजुअल है and he is a resident as well as ordinary resident. Previous year is 21, 22 and 22, 23, and we'll start with the computation of total income. इसमें सबसे पहले क्या आएगा? What will be the first thing that will be there is income from salary.
राइट, बिकॉज जो जैसे दिया है उसी ऑर्डर से लिखो, देन यू विल नॉट गेट एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. ओके, इनकम फॉर्म सैलरी में सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी. सो लेट्स डू दैट बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी में क्या दिया है, दे हैव प्रोवाइडेड यू द पर मंथ वाइज. तो हमें क्या चाहिए, पर ईयर का चाहिए ना. सो 30,000 इंटू 12 मंथ्स कितना आएगा, 30,000 इंटू 12 मंथ्स विल बी हाउ मच, 30,000 इंटू 12 विल बी 3,60,000. ये एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो सब लोग थोड़े लेथार्जिक हो गए क्या. बेसिक सैलरी के बाद आता है अपना डीए विच इज योर डियरनेस अलाउंस. which is 20% of basic, right? So 20% of basic कितना आता है, 3,60,000 into 20% will be how much, 10% will be 36,000. So ये 72,000 आएगा. करेक्ट. उसके बाद डियरनेस अलाउंस के बाद हमें क्या दिया है, बोनस दिया है. बोनस इज टैक्सेबल अमाउंट. बोनस कितना आता है, 30,000, मतलब उसका जितना मिला है उतना. देन दे हैव मेंशन्ड द एचआरए दैट इज हाउस रेंट अलाउंस दिया है. एचआरए भी पर मंथ दिया है. सो 800 इंटू 12 कितना आता है, अमाउंट कितना आएगा, 9,600. करेक्ट है. उसके बाद परक्विजिट्स है, राइट. परक्विजिट्स दिया हुआ है, दैट इज योर गैस का बिल दिया, राइट. गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, water and electricity, and the amount of it is 2,500. Next thing is given to you is arrears of salary. but arrears of salary में उसने पूरा का पूरा रिसीव नहीं किया, उसमें उसने टीडीएस पे किया. सो जो टीडीएस पे करा है वो उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा, एंड जो बाकी का अमाउंट है वही टैक्सेबल होगा. ओके, सॉरी, टीडीएस जो पे किया वो उसमें ऐड हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू गेट द ग्रॉस इनकम. ओके, एरियर्स ऑफ सैलरी. नेट इनकम यहाँ पे हमें दिया हुआ है. सो दिस इज नेट, वी नीड ग्रॉस इनकम which is 50,000 add TDS which is given as 15,000. so outer column कितना आएगा, 65,000. okay, next TDS के बाद they have mentioned और कुछ दिया है नहीं, और कुछ भी नहीं दिया है. so we can take this amount outer को मतलब इसका टोटल ले सकते हैं. find out the total of this. ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करो कितना आता है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. सैलरी के डिडक्शंस कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर होते हैं, कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर. एक तो अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन है, which is 50,000. The next it is professional tax paid, which is 200 into 12 months. So it is coming as 2,400. Total deduction available is 52,400. So outer column में amount कितना आएगा, income from
What will be the amount for income from salary? सब लोग सो गए आज? हाँ, what it will be? It is 4,86,700. और ऊपर का आंसर कौन देगा? 4,86,700. Okay. And what is the gross salary? That is 3,60,000 plus 72,000 wala is 5 lakh something. 5 lakhs. Is that answer correct? Now B. B is what? Next कौन सा दिया है हमें? Income from house property. और ये हाउस प्रॉपर्टी क्या है? एसओपी है, राइट? सो एसओपी का रूल क्या बोलता है? एसओपी में एनएवी बिकम्स योर नील, बिकॉज यहाँ पे हमें we don't receive any kind of rent from our own self, right? We don't charge ourselves for rent. तो यहाँ पे NAV हमेशा क्या होता है? NAV हमेशा क्या होता है? That is net valuation is nil, right? Less. Just copy it from here. इसमें भी क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शंस होता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे आएगा नहीं बिकॉज एनएवी का वैल्यू इज नील. सो स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ एनएवी, वो यहाँ पे आएगा नहीं. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. तो वो यहाँ पे आएगा. दैट वी कैन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन विच इज 40,000. सो 40,000 will be the deductions. So यहाँ पे income from house property क्या हो जाएगा? Will be negative, right? So net taxable income from house property. Okay, which is going to be minus 40,000. झालं पण काढून तुमचे आंसर्स. वेरी गुड. minus 40,000. So उसके बाद हमें क्या मिलता है? टैक्सेबल इनकम, जिसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, right? Which is 4,86,700 minus 40,000, which will come as 4,46,700. Correct? Now we'll move to the deductions under chapter 6A. पहला यहाँ पे कौन सा आएगा? जैसे दिया है वैसे ही लिखो, ठीक है? पहले ही उसके इसमें क्या दिया है उन्होंने? वो हैंडीकैप्ड है, राइट? सो हैंडीकैप का जो है वो लिखो पहले अंडर सेक्शन 80U, राइट? फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, ब्रैकेट में लिख देना 85%. एंड वी नो दैट इसके लिए रिडक्शन कितना अवेलेबल है? 1,25,000. ये लमसम अमाउंट का रिडक्शन अवेलेबल है इसमें. नेक्स्ट, सेकंड इज अंडर सेक्शन
इसने क्या लिया था, हाँ, ये लिया ना, मेडिक्लेम लिया है, दैट गोज अंडर 80D, राइट. सो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम इज 4000 इज पेइंग, सो 4000, टोटल कितना आएगा आउटर कॉलम में, 1,29,000, right, is going to be 1,29,000. So that is the deduction available here. Check, ये माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा, which will consider as net taxable income. It's coming as 3,17,700. Okay, 3,17,700. Okay, things are clear here. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबका. Okay, good. Now we'll move to the next question. Next question. Next question has house property and other sources wala combination. Okay, so let's start with the next question. What is given in the next question? Mr. Wadekar owns 2 houses in Mumbai. Okay, so he has house property 1 and house property 2. उसमें से एक जो property है, that property is a let out property and one property is this self occupied. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, SOP बोलते हैं, right? SOP में we know NAV is nil. Always remember that. Okay, now next, what is been given to you? Nature of the property के बाद municipal valuation दिया हुआ है and fair rent is given. So we know that with these two things will be only considered for whom? ये किस चीज के लिए consider होगा? Let out property के लिए, right? Then we have rent received. So यहाँ पे भी rent received is much more than your municipal valuation and fair rent. So consider क्या होने वाला है, and at the end is rent received. Okay, so your annual जैसे हम लोग gross annual value बोलते हैं, that is going to become as your actual rent received, which is 3,50,000, less your municipal taxes paid, which is 20,000, right? Expenses में उतना ही है, that is what he has paid. That so you will get NAV from that. And उसके बाद उसने कुछ expenses pay करे हैं, वो बाद में देखा जाएगा. Fire insurance premium paid दिया, right? Collection charges is there. Then land revenue payable is 1,500. Interest paid on loan taken on the construction of the house property. ये आपको deduction available होगा under section 24(1) under in house property itself. Then repayment of the principal amount of loan and the date on which the loan was taken. So ये दोनों चीजें हमारे लिए important है, right? Next, Mr. Wadekar also received the following income during the previous year, 21-22. So royalty on book returned by him is 25,000. So ये जाएगा other sources में. Dividend received from the cooperative society, which is 5,000. Again, income from other sources. Interest received on debentures from Indian company, which is 5,000. It is also your income from other sources. He contributed rupees 11,000 to LIC pension fund policy. So ये कहाँ पे जाएगा आपका? Where you will record this, ATC or ATCCC? Where you will record this? कहाँ पे record होता है ये? This goes in ATCCC. Okay, triple C में जाएगा. और ATC में क्या जाएगा? ATC में आपका वो housing loan का repayment जो हुआ है principal amount का, that we will be considering in repayment of housing loan, वो वहाँ पे consider होगा. ठीक है? For both the properties. यहाँ पे 50,000 है, वहाँ पे 10,000 है, so ये वहाँ पे consider हो जाएगा. Total deduction available is 1,50,000 दोनों का मिला के, but यहाँ पे इनको total deduction कितना हो रहा है? ये this is somewhere close to 11,000
और वो 760 plus 11 71,000 का. So he can claim the whole amount as deductions from net taxable income. Okay, gross taxable income. Okay. Have you taken the screenshot? Can we start with the solution? Can we start with the solution? If you have not taken the screenshot, please do so. Okay. So if you are done, we will start. Okay. Mr. Wadekar is the name. Question number 32. Mr. Wadekar. All other things remain same. वो assessee है, individual है, resident and ordinary resident भी है, and those things will remain constant. That is your previous year is 21 and 2, and assessment year is 22, 23. So we'll start. यहाँ पे सबसे पहले, so they have given you income from house property, so we'll consider that income from house property. इसमें अभी दो प्रॉपर्टीज है. सो पहले हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं? जो पहली प्रॉपर्टी लेंगे, विल कंसीडर दैट प्रॉपर्टी फर्स्ट. Which property we are going to take? They have given you let out property, right? So let out property. मी स्क्रीन नाही दिसत, असं कसं? शेअर तर केली मी. दिसते अस्मिता आता? ओके, ठीक है. लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या क्या दिया है? फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन. सो वी नो दैट वी विल गिव यू द एक्चुअल लेटेबल वैल्यू. सो अगर तुम लोग चेक करते हो, सॉरी, अगर तुम लोग चेक करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल लेटेबल वैल्यू कितना आएगा? विच इज द हायर इन बोथ, जो दोनों में हायर होता है वो, राइट? तो यहाँ पे हायर इज योर म्युनिसिपल वैल्यूएशन. सो लेट्स, आई विल जस्ट राइट इट डाउन. सो फेयर rent is given as 1,90,000. Then municipal valuation is given as 2 lakhs. So actual lettable value is the higher of fair rent and municipal valuation, right? So actual lettable value is 2 lakhs. Now compare किसके बीच में होगा? जो rent आपने receive करा है. So actual rent received is how much? 3,50,000. Now we have to check इन दोनों में सबसे highest कौन है, and we will consider that as your gross annual value, right? So gross annual value will be 3,50,000. Am I clear? जो इनमें से सबसे highest होता है, that we have to consider for gross annual value. Less if we have any municipal taxes paid, जो कि हमें दिए हुए हैं. So municipal taxes paid कितना है? Municipal taxes कितना पे करा है इन्होंने? 20,000. Okay. And those who need it, deductions का ये ना, I will send it by tomorrow, okay? Because I will make that notes today and then I'll send it tomorrow. Just remind me somebody, I will send it, okay? और आज भी कोई लोग आए थे जिनको थियरी नोट्स चाहिए था. So I have given it in the class E. So if you have anybody in the division E, please ask them to share it with you. Because right now I don't have it. Anything. If I get it, or I'll ask Atharva to share it with you all. But अगर तुम लोगों के पास अथर्वा का नंबर है, तो you can ask him also to give those notes to you. Okay. Gross annual value is 3,50,000 less municipal taxes paid, which is 20,000. Now you will get your net annual value. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? NAV, right? Which will come as 3,30,000. Now, once you get that, you know, always we have deductions under section 24.
Just give me a second. I'll just copy paste. और यहाँ पे NAV है तो हमारा जो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आएगा standard deduction, which is 30% of NAV. How much it is? 30% of NAV will be how much? 3,30,000 ka 30% is 99,000. Okay, less. And the second thing is, or the second deduction that is available is interest on loan. सिर्फ यही प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है दैट वी कैन गिव और उसका रिडक्शन ये प्रॉपर्टी के अवेलेबल है. ओके, सो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट कितना है? 1,60,000. सो 1,60,000 इज अवेलेबल हियर. इसका टोटल विल गो टू आउटर कॉलम एज इंटरेस्ट. कितना मिल रहा है देखो, हाउ मच इट इज? 99,000 प्लस 1,60,000 is 1,59,000. Am I correct? Am I correct? So 3,30,000 minus 1,59,000 will be how much? Is it coming 2,59,000? Sure. How? 3,30,000, 33 minus 15. No, I am little dicey. Huh? Let me check. So 9. Yeah. Sorry. Yeah. 2 lakhs. Yeah. Sorry. इधर आएगा. This will be 2. I got little confused कि तुम लोग ऐसा कैसे बोले करके. Sorry. 2,59,000 को 3,30,000 में से माइनस किया तो कितना आएगा? 71,000. Yes, 71,000. Now we have a second property, right, which is self-occupied. Self-occupied property के लिए क्या आता है? NAV is going to be, NAV कितना आएगा? We know it now, it's nil, less. इसमें सिर्फ डिडक्शंस ही अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे it is only available कितना? डिडक्शंस कितने अवेलेबल है? इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन लोन का if you check that interest or the loan is taken before 99, so any loan that is taken before 1st April 1999 तो हमें वहाँ पे limitations है कि interest कितना allowed है? Only 30,000, right? So interest on loan, if you want you can write down taken before 1,499. So reduction available will be only 30,000. Okay, बाकी कोई reduction यहाँ पे आता नहीं है. So that's it. So यहाँ पे minus में amount जाएगा 30,000. So net taxable income from house property will be yes, it is 41,000. Okay, now ये हो गया एक का. Now we have second income source, right, which is income from other sources. इसमें it is very easy. तीन ही चीजें दी है, तीन ही चीजें तुम लोगों को लिखनी है, right? First it is royalty received. On books, amount is given as 25,000.
Then second is given as dividend received. Dividend received, the amount is 5,000. Next is given as interest on debentures. And that amount is 5,000. Okay. So total income कितना हो जाएगा? Income from other sources के लिए? Is it 35,000? That is going to be net taxable income from other sources. Okay, this is the 35,000. इसके बाद हमें क्या मिलता है? Gross total income, right? $41,000 plus 35,000 is going to be 76,000. Correct? इसमें से हमें क्या करना है? Deductions under section, chapter number 6A. यहाँ पे दो डिडक्शंस अवेलेबल है. हमें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट, राइट, दैट इज लोन का जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो उसका रीपेमेंट है, विच विल गो इन एटीसी. और एटीसीसी में क्या जाने वाला है? देयर इज वन थिंग दैट ही हैज डन नाउ, दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू द एलआईसी पेंशन फंड, दैट विल गो इन एटीसीसी. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इन अंडर सेक्शन एटीसी, under section 80C, okay, repayment of housing loan principal amount है. So एक का 50,000 है और दूसरे का कितना है? 10,000. So total is how much? 60,000, right? Or second is under section 80 CCC, contribution to LIC pension fund और policy fund जैसे. ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया था? I forgot the amount. उसका ये पेंशन फंड ही लेगा. LIC पेंशन फंड. And the amount is 11,000. So total deductions available are 71,000. So 76,000 minus 71,000. What is going to be your net taxable income? Yes, it's only 5,000. So net taxable income is going to be 5,000. Is the deductions are clear? ठीक है? So we'll stop here for the day, or you want to do one more question? है ताकत? We'll stop here for the day, or will you wish to do one more question? I don't mind. I will do the other question. Yeah, I thought so. Okay, we'll stop here for the day. We'll do more questions on Thursday. Okay? डिसाइड करो वो एक क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए. एक दिन बोल रहा है करना है, एक दूसरा बोल रहा है नहीं करना है.
Okay, let's do then one more question. Can you see the question? Can you see the question? Okay, let's start. So this question is about business and other sources. Okay, थोड़ा question बड़ा हो जाएगा. Okay, let's start. Mr. Shivaji Raje, proprietor of SR and Company, furnishes you the following information for the year ended 31st March 2022. What is given to you? Profit and loss account दिया हुआ है, right? So we know all the business income and expenses are allowed. Other than that, it's not allowed. So we have to add back or deduct it, right? So let's start. Salaries. Salaries is considered to be your business expense, तो वो allowed होता है. Next, fire insurance premium, it is also allowed. Staff welfare expenses allowed है. Interest on proprietors capital. Now you will tell me कि ये allowed है कि नहीं है. Interest on proprietors capital is your proprietors, right? So वो allowed नहीं है, so you have to add it back. Next, salary to proprietor again not allowed, so ये भी वापस add back हो जाएगा. Next, general expenses are allowed. Advertisement के लिए नीचे देखना पड़ेगा, अगर कुछ if anything is not related to business है, then only उतना amount you have to consider and add back again into the profit. So provision for bad debts allowed है, traveling expenses allowed है, repairs and maintenance are allowed because it's a business. Business में हमेशा याद रखना anything and everything which is of business is allowed. Anything and everything which is not related to business is not allowed. ठीक है? So if it is expense, then you add back the amount to the net profit. If it is income, then you have to remove the amount. ठीक है? जो हम लोग actual effect देते हैं, उसका exactly उल्टा effect देना होता है when it comes to the preparation of your income tax. ठीक है? I hope, because that is a major क्या बोलते dilemma or a major doubt that everybody has when you do the calculations for business. Okay, still you find it any difficulty into it, I am there in the college, you can anytime come to me and ask me the doubt. ठीक है? Doubt होगा तो you can anytime come to me. Okay, then we have investment in the public provident fund. Again, do the investments are a part of your business? मतलब provident fund वाला business related है? नहीं है, so ये भी क्या हो जाएगा? Add हो जाएगा. Then we have advance income tax. Income tax है, business का कोई GST tax नहीं है, तो ये भी add back हो जाएगा. Audit fees, business का expense है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, that will remain as it is. Depreciation के लिए भी नीचे देखो, अगर कुछ mentioned है then only you consider it, otherwise जो दिया है वो हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं कि वो allowed है. ठीक है? Then we come to the income side. Income side में है interest on fixed deposits and interest on public provident fund. ये दोनों भी कहाँ के हैं? Which will go to the other sources. तो ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो इसको क्या हम लोग करेंगे? Reduce कर देंगे from gross profit. Now come to the additional information. Depreciation as per income tax rule is 16,000 और हमने कितना दिया है? 13,000, right? So what we can do, we will have to reduce 13,000 first and then we have to add back, sorry, we have to add back 13,000 and 16,000 हमें क्या करना पड़ेगा? Less करना पड़ेगा. ठीक है? Because allowed is how much? 16,000 ना? So we'll minus 16,000 और जितना हमने actual में दिया है उसको हम लोग minus add कर देंगे पहले. ठीक है? Next it is advertisement includes advertisement of rupees 10,000 in the souvenir of published by a political party. Political party does not related to your business. तो वो जो expense है particularly which is of your which is done for the political party, वो आपको क्या करना पड़ेगा? Add back करना पड़ेगा into your net profit. Next we have repairs and maintenance expenses are fully incurred for residential house of proprietor. तो ये जो आपका यहाँ पे कहीं पे जो repairs and maintenance दिया हुआ है, right? That expense is not a business expenses, right? Am I right or not?
इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस ना, सो ये भी कहाँ पे जाएगा, ये भी एड बैक हो जाएगा इनटू नेट प्रॉफिट, एज इट इज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंस. He paid mediclaim insurance of rupees 18,000 by check for himself. So ये हमेशा से that we know कि हमें ये क्या होता है, where we consider this, ये कहाँ पे होता है, मेडिक्लेम कहाँ पे जाता है, ऊपर दिया हुआ है ना, ऊपर देख के भी बोल सकते थे एटीडी, ऐसे तुम लोग भूल जाते हो. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 42. नाम क्या है इसका, मिस्टर शिवाजी राजे. नाम भी भारी है बंदे का. फर्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस. ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउ मच इज गिवन, 1,09,000. नाउ जो भी एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वी हैव टू ऐड, राइट. तो सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस दिया है, लेट्स सी. सैलरीज है, अलाउड है. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अलाउड है. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल इज नॉट अलाउड, सो दैट इज फर्स्ट. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स capital amount is rupees 5,000. Next, interest on proprietors capital के बाद है salary to proprietor. Salary to proprietor is how much, 12,000. Next, salary to proprietor के बाद है general expenses which are allowed, right? Yes. Then we have advertisement, but we know that advertisement is done for the political party, वो allowed नहीं है. So advertisement for political party, जिसका एक्सपेंस कितना दिया है एडजस्टमेंट में, 16,000. सो दैट इज नॉट अलाउड, तो वो एड बैक हो जाएगा. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट विच इज अलाउड. ट्रैवलिंग इज अलाउड. देन वी हैव रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस है, सो यू कैन पुट इट एज पर्सनल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस फॉर क्या दिया है नीचे वो, रेसिडेंशियल हाउस, राइट. So anything you can write. I am just writing down यहाँ पे personal expenses, और चाहिए तो तुम लोगों के लिए ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए हुआ किया गया एक्सपेंस है ये, एंड अमाउंट इज 5,000. उसके बाद we have repairs and maintenance के बाद we have investment in the public provident fund, that is PPF. So investment, एडवर्टाइजमेंट नहीं समझ ले, एक मिनट. हाँ श्रुति, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ is 70,000. Okay, so advertisement for political party is 10,000. Okay, sorry, मैंने ऊपर का अमाउंट देखा, I'm extremely sorry. सॉरी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखा एडजस्टमेंट, सॉरी. वो ऐसा होता है फोटो में, कभी कभी ऊपर नीचे अमाउंट हो जाता है. ओके, व्हाट इट इज दिस एडवर्टाइजमेंट थिंग इज कि एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, राइट. बट अगर किसी बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट करा है, पर वो किसका करा है, खुद का नहीं करा, दे हैव गिवन मनी टू पुट द होर्डिंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है. सो वट एवर एक्सपेंसेस यू इनकर फॉर द बिजनेसेस, मतलब बिजनेस मतलब यू कैन से इवन एनीथिंग अदर देन बिजनेस. ओके, आप किसी और का एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो, आपका खुद का बिजनेस का छोड़ के, तो इट इज नॉट अलाउड.
ठीक है. So those expenses, because you could have retained that profit within your business and you are not doing so. So वो जो है वो that you have to add back as the income, मतलब क्या बोलते हैं उस, वो आपका excess expense हो चुका है. ठीक है. So that's why we add back that particular amount into the net profit again to get to the actual amount of profit. ठीक है. Or actual amount of income, you can call it. Is that clear, Shruti? Shruti clear है का? Okay. Investment in PPF के बाद we have audit fees and then we have depreciation. So let's do it for the depreciation. मैंने कुछ तो miss किया. Yeah, advance income tax. Advance income tax, because income tax is a personal expense. So advance income tax is 8,000. उसके बाद है depreciation. As per books लिखोगे तो भी चलेगा. As per books, it is 13,000. Now just once check कि सारा कुछ लिखे हो गया है क्या? Have we mentioned everything? Have we mentioned everything? Yes. Yeah. And if I say no, then? क्या? 16,000. नहीं, वो तो बाद में लेस करना है ना, खुशी. There is one thing that is left. What it is? एक चीज है जो लेस करनी और ऐड करनी हमें बाकी है. What it is? सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर किया, जनरल एक्सपेंसेस क्यों करेंगे? इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस. बता दूं? Provision for bad debts. This is actually your profit ना, मतलब this is something, yeah, correct, bad debts, because bad debts क्या होता है? ये हम लोग प्रोविजन करते हैं ना इसका, ये होना ही है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. उन्होंने bad debts नहीं बोला, they have said it provision for bad debts, right? It is kind of reserves that you have creating out of your debtors, right? So this is also a part of profit that you are removing and creating a provision out of it. So this is also one thing that you have to add back into the profits. Okay. Now कितना होता है देखो, total amount. Check total amount कितना होता है add करने के लिए. What is total amount यहाँ पे? $2 lakhs. नहीं, यहाँ पे कितना है? 1,30,000. And total it is 2,39,000. इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट मार ला. लेस में सबसे पहले क्या आएगा? जो डेप्रिसिएशन बोला है ना उन्होंने एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो करो पहले. दैट इज डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो 16,000 पूरा का पूरा अलाउड है, तो वे विल टेक इट एज अ लेस कर देंगे उसको पूरा पूरा नेट प्रॉफिट में से. देन वी हैव interest on FD. This is the only thing that is going to go in your other sources also. So 8,000. And third, it is interest on PPF. Right? Which is 15,000. Check how much it is. 16 plus 8 will be 24, right? Yeah, it is 39,000. Yeah. So net taxable income. कितना आएगा? It's 2 lakhs. Now, next head. Next head क्या है?
Income from other sources. इसमें सिर्फ एक ही चीज है, that is your FD. I'll just copy from here and choose. Directly you can write it down in the outer column. C is your gross total income. So 2 lakhs plus 8,000 will be how much? 2 lakhs 8,000. Now we'll go for the deductions. Just right? Yeah, 2 lakhs 8,000. Now, पहला कौन सा आएगा? फर्स्ट डिडक्शन कौन सा लिखोगे? They have data contribution to PPF, right? So that is ATC का expense or ATC का deduction rather. That is contribution to PF. कितना आएगा? 70,000 दिया है ना इसमें, 70,000. और lastly it will be, हाँ उसने वो mediclaim दिया है ना, that is 80D. Under section 80D, that is mediclaim insurance page. 18,000. कितना आएगा टोटल? 88,000. And it's going to give you the net income, right? Net taxable income. वो कितना आएगा? 1,20,000. Okay. The things are clear to you? Is the things are clear to you? Okay, good.